Welcome back to our video series of Advanced Linear Algebra. In this lecture, we are going to discuss unitary and orthogonal operators and their significant properties. We had already discussed normal operator, adjoint operator and self-adjoint operator. इन सभी के डिस्कशन में जो हमें एक सिमिलरिटी दिखती है दैट इज विद द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. But before discussing unitary and orthogonal operator, let me tell you some important observation about a linear operator T that defined from input space V to V. We define the adjoint of this T as T of x comma y is equal to x comma T star of y. If this equality hold for all x comma y belongs to V, then in that case we call this T star at adjoint ऑफ टी. राइट. अब मान लेते हैं कि अगर v भी कोई एक लीनियर ऑपरेटर है दैट इज डिफाइंड ऑन दिस इनर प्रोडक्ट स्पेस v. सो वी हैव दिस रिजल्ट दैट इज t of u plus v star, that means star adjoint of addition of two linear operator is equal to the addition of adjoints of operator. राइट. अब इस तरीके का जो ऑपरेशन है या इस तरीका का एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के द्वारा किया जाता है. कैसे? जैसे इफ वी चूज z1 प्लस z2 एंड देन वी पुट द बार, देन दिस इज इक्वल्स टू z1 बार प्लस z2 बार. ओके, दैट मीन्स द कॉन्जुगेट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ कॉन्जुगेट्स. सो इस तरीके का प्रोसेस जो हम एडजॉइंट के लिए कर रहे हैं दैट इज डन बाई conjugate in the complex number system. Now if you think about the z1 bar then bar, so that is conjugate of a conjugate is the complex number itself, and the same kind of thing is discussed in for the adjoint also. So we have, if we choose the t star of t star, then this will be equals to t. Then we have again an important thing that is, अगर हम आइडेंटिटी के एडजॉइंट की बात करें सो इट विल बी दी आइडेंटिटी अगेन, एंड द सेम थिंग इज कि अगर हम वन का कॉन्जुगेट की बात करें सो दिस विल बी वन. सो यू कैन सी द रोल विच इज playing by the complex conjugate in the complex number system, the same role is being played by this adjoint in the discussion of inner product space. Okay, now let me tell you कि इस लेक्चर में हम किस तरीके के लीनियर ऑपरेटर को डील करेंगे. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी study those linear operators on an inner product space V such that first of all we have this kind of property. First is, let me write the side by side here. First is, we must have t star t that is equals to t star and it must be equals to I. That is, जैसे ही अगर हम इस फर्स्ट इक्वलिटी को देखेंगे दैट विल डिफाइंस द नॉर्मलिटी ऑफ t, और अगर जब हम इसको इस तरीके से देखेंगे दैट t star I is equal to I, then this defines that for t star is inverse, for t star t is inverse. Okay, so this equality tell about the normality and inverse of linear operator. Okay, then second, preserve length. okay, लेंथ को हमने नॉर्म से डिफाइन किया था. सो इन द सेंस that t of x, norm of t image of any x is equal to norm of the x itself for all x belongs to v. तो हम ऐसे लीनियर ऑपरेटर के लिए पढ़ने वाले हैं जो कि लेंथ को प्रिजर्व रखते हैं, जो कि लेंथ चेंज नहीं करते हैं. जैसे कि आपने, अगर मैं कहूँ कि आर स्क्वायर में रोटेशन करना है बाई द 90 डिग्री एंगल,
तो इस लीनियर ऑपरेटर से पॉइंट्स की पोजीशन चेंज होती है, उनका जो मैग्नीट्यूड है या फिर मैं कहूँ जो नॉर्म है दैट विल बी नॉट इफेक्टेड। तो उस केस में हम कहेंगे कि ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही, और जब ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो उस केस में टी विल बी डिफाइन इन अ न्यू टर्मिनोलॉजी दैट गोइंग टू बी डिफाइन वेरी सून. So this is the second part. Now the third part is about the preserves the inner product. That is, if we identify the inner product between x comma y, that is same as it's a t image, that is tx ty for all x belongs to v. तो हम इस तरीके के कुछ ऑपरेटर्स को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, नाउ टू डिफाइन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ लीनियर ऑपरेटर, let me define some definitions that will tell about the unitary and orthogonal operator. Okay, so definition. This definition defines unitary operator. So let T be a linear operator defined on finite dimensional complex. This word is important. Okay, complex inner product space. Okay, if for this T, norm of image of x under T is same as norm of x for all x belongs to V. Finite dimensional complex inner product space, let me call it V. Okay, if this is true, then we call T a unitary operator. Okay, the second definition is, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हम फील्ड को चेंज कर देते हैं तो उस केस में रिजल्ट चेंज हो जाते हैं. तो यहाँ पर ये डेफिनेशन भी, जब हम कॉम्प्लेक्स फील्ड को कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में टी इज गोइंग टू बी डिफाइन एज यूनिटरी ऑपरेटर. Now in case of the real field, we will define the orthogonal operator. So again, let me write, this will define orthogonal operator. So let T be a linear operator defined on a finite dimensional real inner product space. Real, the previous discussion was for complex, now this is for real inner product space V. Okay, if T on x, norm of this element is same as norm of x, and this is true for all x in V, then T is said to be orthogonal ऑपरेटर. ठीक है, तो अगर फील्ड रियल है तो ऑर्थोगोनल विद द सेम प्रॉपर्टी, अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स है
then t is said to be unitary operator. नाउ यहाँ पर हमने दोनों ही केस में फाइनाइट कंसिडर किया है. व्हाट इफ इनफाइनाइट? सो दिस विल have an extra property, and it is, let me write this, unitary on infinite dimensional. ऑब्वियसली अगर हम यूनिटरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमने कॉम्प्लेक्स ही लिखना है. कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट space. Okay, so let t be a linear operator defined on an infinite dimensional complex inner product space V. Okay, if t is bijection and the norm of t image of every element same as the norm of that element for all x belongs to V, then t is said to be unitary operator. Let me point out this on infinite dimensional complex inner product space. Okay, now the similar definition is for real also. So let me write in a way. If the field is real, that is t is defined on infinite dimensional real inner product space V, then t is said to be orthogonal operator. Okay, orthogonal operator. Okay, with the same property कि t बाइजेक्शन होना चाहिए और t नॉर्म को प्रिजर्व रखता है. ठीक है, so this is about the definition of unitary and orthogonal operator on real, complex, finite and infinite dimensional inner product spaces. Okay, now let me have an example. This is our example 1, and again we are having the same example of infinite dimensional complex inner product space. Okay, so consider the complex. हो सकता है आपको इतनी इन्फॉर्मेशन ना दी हो एग्जाम में, बट क्योंकि हमने इस एग्जाम्पल को डिस्कस करना है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ऑल दिस स्टफ. सो द कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस एच, हमने इसको डिस्कस किया था कि ये एक इन्फाइनाइट डायमेंशनल है. इसमें हमने एस एक्स एट को कंस्ट्रक्ट किया था, इफ़ यू रिमेंबर. हम इसको आई थिंक 4 to 5 टाइम्स अभी डिस्कस कर रहे हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता ही है. ठीक है, लेट
H belongs to H with norm of Hx, or the modulus of Hx, because this is a complex number, is equal to 1 for all x belongs to 0 to 2 pi, क्योंकि h is the space of all on complex valued continuous function which are defined on 0 to 2 pi interval. Okay, and I think you remember the norm as well. So now define t from h to h by t of f is equal to h and f, product of h and f. Then show that t is a unitary operator. Why unitary? Because we are discussing the complex inner product space. The solution is given by the norm of t. So let me first point out the inner product that is defined on h. Okay, so we know that the inner product for h is given by inner product f comma z is equal to 1 upon 2 pi integration from 0 to 2 pi f of t z of t bar dt. So you need to take the complex conjugate of the second component of this inner product for all f and g in h, right? क्योंकि अगर हमें नॉर्म आइडेंटिफाई करनी है तो हमें इनर प्रोडक्ट के बारे में पता होना ही चाहिए, ठीक है? Then what about the norm of t on f square? So that is the inner product of t of f with inner product of t of f, right? And we know this is given by product of h and f, right? This is the product of two function or the composition of two function, okay? And this will be deal with 1 upon 2 pi 0 to 2 pi, and then we will write h t f t and then h t f t bar dt. Okay, you know the integrand can be written as that is equals to 1 upon 2 pi integration from 0 to 2 pi, and this is equals to ht, we can write this as then ht bar, right? We can choose this bar here. Then we have ft and ft bar dt. And from the complex conjugate property, we can write this as 1 upon 2 pi 0 to 2 pi, and it will be equals to norm or the modulus of ht square, and this is modulus of ft square dt, right? Here you can write, since z1 z bar is same as mod of z square. Now this is equals to 1 upon 2 pi 0 to 2 pi, and we are given that this ht is of modulus 1, so this value will be equals to 1, and we are remain with modulus square of modulus of ft, okay, dt. Now you can see I can write this ft as 1 upon 2 pi 0 to 2 pi, and again in place of this square we can use this number and its bar, product of number and its bar. So I can write ft bar dt, right? And by the definition this is nothing but the inner product of f comma f, and inner product of f comma f is nothing but the square of norm of f. Okay, and we know कि norm हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं. So we have that norm of t of f
is equals to norm of f square, right? Up since you can see this is equals to norm of t of f is equals to norm of f. Why? Because since norm of v is always non-negative for all v belongs to the vector space v. Okay, this is the one property of norm. So here you can see this t preserves the norm, hence we can say this t is a unitary operator. Thus t is a unitary operator. Okay.